भगवान। और रश्मि बहन कैसी हो? विनीता दीदी कैसी हो? सब बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बात कर रही थी इसलिए म्यूट थी। ठीक हो रश्मि बहन? थैंक यू विनीता दीदी। रश्मि बहन खाना बन गया? विनीता दीदी आपका भी खाना पीना बन गया कि नहीं? मेरे तो अभी नहीं बना, अभी सब्जी काट के रखी हूँ, जा रही हूँ अब थोड़ा। जा रही हूँ। खाना बना रही हूँ थोड़ी, चल रही हूँ। अच्छा अच्छा। चलो अब वो नंटी पे लगा दूं, क्या नाम था, नहीं तो बंद हो जाए उनका। बेटावा दुल्हा खिचड़ी खाव्या की नाही, बेटावा दुल्हा खिचड़ी खाव्या की नाही। आज तो रेखा दीदी बनियानी वनियानी टांग के गाना गा रहे हैं। पहले ब्लाउज झुलनिया उतारी बनियानी हम बनाए बाटी की हाय वह टांगे हैं। पहले सब उठाई नी। पता नहीं आज का मुझे, हाँ। देखना अभी ऊपर बनियानी बनियानी बनी है। कितने नंबर की है? 32 की 36 है, मुझे नहीं पता। देख लो रश्मि बहन। पहले देखा दीदी का। उसको ना बनाई होती तब गाना नहीं जाता क्या? हमारी लाइफ से निकल के पहले उनके गाना का एडिटिंग देख लो। श्री शक्ति दीदी आ गई, वेलकम। राधे। कैसी हो श्री शक्ति दीदी? मटरी की खेती में बैठी।
थैंक यू विनीता दीदी, थैंक यू। कहे उठी भाग्या या उरवले हे जात्या, कहे उठी भाग्या या उरले हे। ये सूखा वो वाली है, कौन टांगे हैं ये, कौन वाली? फॉर्म वाली आय टांगे हैं, इसे सूती ना आय, फॉर्म वाली। बाय बाय सुधा बाय। हाँ देख लेना रश्मि बहन। ठीक है, बाय बाय, दोनों आए घंटा कंप्लीट हो गया, ठीक है बाय बाय। लेकिन देख लेना, रेखा दीदी का फॉर्म वाला है। जबरदस्त दुल्हे के लिए गारी गीत, पहिरे ब्लाउज झुलनिया उतारी। फेस दई के गाय, ठीक है बिल्कुल देखो। हाँ उनका देख लेना, बाय 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 बाय। सूती नहीं है, ठंडी वाली है। शक्ति दीदी कहा गए, विनीता दीदी आप भी देख लेना। अब अपना फेस भी दी हैं, ऊपर ही दिखाने के लिए टांगी। चलो मैं सब्जी चौक दूं, नहीं तो मैं बैठी रहूंगी ऐसे। हेल्थ वाली आंटी के लाइव मजाक पड़े। टीवी चलते हैं बच्चे। कोमल बहन वेलकम, स्वागतान हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आना हो।
खाना बनाओ। टमाटर ठंडी गर्मी दोनों में लगावा जाता है, कोनो बात ना है। लिख दियो ठंडी गर्मी दोनों में पौधा लगाया जाता है टमाटर का। गर्मी में भिंडी का, भिंडी गर्मी। हाँ बताओ। ये सब हमें नहीं आया हो। थैंक यू विनीता दीदी, थैंक यू। पूरा जला गया। थैंक यू विनीता दीदी, थैंक यू। थैंक यू कोमल बहन, थैंक यू विनीता दीदी। कोमल बहन जो करना है कर लो। विनीता दीदी आपको भी जो कोई काम है तो कर लीजिए आप भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। त्योहार कब कहाँ रखा है? सूखी बना दी। हाँ सूखी बनाओ कि थोड़ा जूस वाली? चावल के साथ सेम का सब्जी नहीं खाई जाती। आलू मटर टमाटर की सब्जी निक निक रही तो ना खाई है। सेम के सब्जी खाई है। केहू कभी ना बच्ची नहीं मिले कही कि उतिन ना रही।
हाँ तो एकदम नहीं देते थे कभी। मैया हमारे घर रहे कामना भी मैया घर रहे आपका ध्यान बस ऐसे लाइन में तू बोला ना। ठीक है जहन हमें नहीं आओ हम पैदा हमका कुछ ना आओ। ये हो नहीं आपके साथ समझे। हम मन पड़ी हम बहुत गंवारी हैं। मैडम बोलो प्लीज। चोरी करके उतारा नहीं वो बोल रहे हम नहीं लाए पापा वो नहीं लाए बोले कि पापा मैं नहीं लेते हैं। कौन आया होगा। पापा नहीं साधारण घंटा हमारे पास 4 घंटा देखो मेरे लाइन मक्का लगा रखी है। 2 घंटा एक दिन रहन 3 घंटा तो दीदी से तुम्हारे घर रहे कौन। इन्हें दूर करो इन्हें दूर करो साले निकम्मे काहे उठी भाग्याय उड़ले हे जात्या काहे उठी भाग्य पाहुरौले हे जात्या अगवा हट कुकुर बस ऐसे देखो तुम क्यों आपको डरती नहीं वहां बैठ के वहां नहीं डर लगा क्या। अगवया गवा सोनू रामा खिया दे अगवया गवा
काड़े रामा भागे जाए पितावा सुवन भैया किया दे जाए पकड़ी लाऊ सारे कमारा जाए पकड़ी लाऊ सारे कमारा। थैंक यू सरिता बहन, वेलकम, स्वागत, राधे राधे। कैसी हो सरिता बहन? लाइक कर दिया दीदी हमारे देते, बहुत बहुत लाइक, बहुत सुंदर। आगावाया गावा राज, आगावाया गावा दीदी कौन जात हुए मैं पता नहीं ते आई। आगावा तेवारी जीजा भागे जाए पीछा राजू भैया खिया दे पाखड़ी लाऊ सारे कमारा जाई पाखड़ी लाऊ सारे। बस Agamaya gawa sanudama, agamaya gawa gulu भैया भागे जाए पीछा मोनू भैया खिया दे जाए पक। 7:50 पर आई हूँ दीदी। ठीक है सरिता बहन, कोई बात नहीं। गोलू रमा भागे जाए पिछावा सोनू भैया खिया दे जाए पकड़ी लाल सारे हमारा जाए। काले का दादी रो आगवा आगवा दीजा भागे जाए पिछवा राजू भैया किया दे जाए काहे उठी भागे आए और ले जा कूटता जात्या पछुआ रता जात्या अपनी बहिनी के अपनी बुआऊ के अपनी चाची के और का सुनाई आगे। सबा भरा दिया क्या सामना बहनी आई गई हमारा आज तुम्हें याद करते रहे। साधना बहनी वेलकम, स्वागत, राधे राधे। कैसी हो मेरी प्यारी साधना बहना? विनीता दीदी राधे राधे। सरिता बहन बोल रही हैं। पकड़ी लो सारे कमारा जाई पकड़ी लो सा काठिया दा जाई पकड़ी लो। साधना दीदी राधे राधे। थैंक यू कोमल बहन। धन धन दूर करो चाले निकम्मी है इन्हें दूर करो। सुधा बहन, मैं साधना आपसेल से आई थी तभी से आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हमको लगा कि शायद आप हमको देखा ही नहीं। साधना, हाँ तो नहीं, वो कमेंट नहीं आ रहा था। ये आया साधना पांडे ब्लॉग वाला, फिर वो नहीं था, वो नहीं दिख रहा था। सही बात तो यही है, उसका कमेंट नहीं दिख रहा था हमको। साधना बहन, उसका कमेंट सच में नहीं दिख रहा था हमको। इसका कमेंट दिखा, मैं तुरंत पहचानी।
दो आपका है। ठीक है सरिता बहन, कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल आप लोग आने देंगे। आज अभी हमें 3-4 घर में जाना है। बिंदु दीदी के घर जाना है, और शिव भक्ति दीदी के, हाँ चाहे चाय पीने जाना हो, चाहे नाश्ता करने जाना, कुछ भी करने जाना है। और शिव भक्ति दीदी के घर जाना है, और किसके घर जाना है। आनू दीदी चार्ज, अरे मेरी भी चार्ज नहीं है, मैं भी चार्ज लगा के कर रही हूँ। लगा दो लगा दो लगा दो। ठीक है। कुछ वाले आए थे आपके वीडियो पर कमेंट, हाँ तो दे दूंगी आपको ब्लू, ठीक है। ठीक है, उस पे आप छोड़ देना तो मैं दे दूंगी ब्लू। एक उस दिन आपकी आईडी आई थी कौन सी वाली, पे उस पे है मेरा ब्लू, उस आईडी पे है मेरा ब्लू। उस आईडी का नाम ही नहीं मेरे को याद है, एक दिन आई थी आप। मोबाइल आ गए, बिल्कुल बिल्कुल सरिता बहन, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि हम भी आपके टाइम खाना खाती, बर्तन मारती, किचन साफ करती, ऑन ही करके। ठीक है, एक गिलास लाती, दोनों बहन पी लो। आरोही पांडे है, अच्छा। हाँ किसी पे था, लेकिन मेरे को याद नहीं था किस पे ब्लू मैंने दी थी। मेरा तो एक ही वार्षिक चल रहा है, अभी अभी जीरो भी बनेगा, तुरंत जीरो बनेगा। थैंक यू विनीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कोमल बहन, थैंक यू श्रद्धा बहन, थैंक यू साधना बहन। साधना बहन, आप नेपाल का सब कुछ दिखाती हैं, आप नेपाल से हो क्या। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो वो नेपाल का ही रहता है, लक्कड़ उक्कड़ कहाँ से लाती हो। तो बाय बाय विनीता दीदी, बाय 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 बाय। सही में विनीता दीदी गई, मेरा एक ही वो हो गया जीरो आज ही। अरे अभी तो हाँ विनीता दीदी, बाय 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 बाय, फिर भी जीरो आज ही हो गया। हाँ सुधा बहन, मैं नेपाल से हूँ, अच्छा। वही मैं आपकी वीडियो देख रही थी ना, तो आप यही दिखाती हैं, तो मैं सोच रही नेपाल से हैं क्या ये बहन। हाँ। अब गोरी और काली तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये देखी थी, वीडियो देखी थी तो पता लगा। ये नहीं पूछा जाता। थैंक यू कोमल बहन, बाय बाय विनीता दीदी, बाय बाय। नेपाल के आदमी गोरे होते हैं क्या। नेपाल में, पर उत्तराखंड में ज्यादा बर्फ, हिमाचली आदमी बहुत गोरे होते हैं। हमें नहीं पता गोरे होते हैं सांवले। साधना बहन, मैं आपको 4 घंटे दी हूँ।
एक दिन 2 घंटे दी हूँ, कल 1 घंटा दी थी, आज सुबह 1 घंटा दी थी। ठीक है। मेरा शादी नेपाल में हुआ है, मैं हाँ वही तो यार मैं पूछ रही हूँ। तो आप ये बताओ, सच बात बताओ कि आपका कैसे इंडिया और नेपाल से आप पहुंच गई, इंडिया की है, नेपाल कैसे पहुंच गई? लव मैरिज था क्या? तो वो नेपाल की ही है ना? कौन है नेपाल का? अच्छा, आपकी क्लास में। लव मैरिज था। ताना बहन आपकी शादी लव मैरिज था क्या? उस लड़के की मम्मी लव मैरिज की है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सामने। नेपाल में मोहल्ला काली मंदिर है, पहाड़ पर मुंह पर बैठी हुई है, वाह। हम्म। अच्छा, थैंक यू कोमल बहन। नेपाल पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साना बहन। ठीक है मेरी बहन। अरे मैं साधना बहन पूछ रही हूँ, बुरा मत मानना। आप इंडिया से नेपाल कैसे पहुंची, लव मैरिज पहुंची कि ऐसे, मतलब वहां कोई आपके रहता वहता है, शादी तय होके गई? अरे हुआ है, सभी लोगों का शादी होता है, नेपाल इंडिया से तो है ना, विवाहिक रिश्ता तो है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हम सोचे दर्द बहन क्या लिख के दी थी? ताना दीदी मैका कहाँ है, यूपी में? नहीं जी, अच्छा 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 साना बहन। नहीं साना बहन, आप भी साना पांडे लिखी थी ना, तो मैं सोची कि कहीं आप भी अयोध्या या इधर की होंगी, यूपी की, इसलिए मैं पूछने लगी कि आप नेपाल में। मेरा नगर कुशीनगर में जिला में है, अच्छा। तो यार बीच यूपी में हो आप। कुशीनगर यहाँ अयोध्या के थोड़ी दूर बाद है, अयोध्या से थोड़ी ही दूर है ना। कुशीनगर हम सुनी हूँ। थैंक यू कोमल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, हाँ अयोध्या से हमें लगता है थोड़ी दूर है, कहीं और आगे है, कहीं सुनी हूँ, अभी मुझे भी सही से पता नहीं है कहाँ। क्योंकि हम भी कहीं ज्यादा घूमे टहरे थोड़ी हो सकता है। पहले माँ बाप का प्रशासन था, टाइट था, प्रशासन टाइट था, अब पति का प्रशासन टाइट है, तो इतना हम कहीं गए आए नहीं। हाँ? नहीं, मैं साला वैसे पूछ रही थी, मतलब कहाँ का है आपका? मैं कहीं हो नहीं तो एक डिटेल नहीं चाहिए, पूछ ही रही हूँ। थैंक यू सर बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मोबाइल चार्ज में लगाई हूँ दूसरी वाली, क्योंकि सपोर्ट करना रहता है। एक मोबाइल कबाड़ और बनवा ली।
उसमें बहुत स्लो चार्ज हो रहा है ना। आज हमारी रेनू बहनी नहीं आई। रेनू बहनी आवत ही बस 2 मिनट रही में लाइन में। थैंक यू कोमल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसका? थैंक यू कोमल बहन, थैंक यू श्रद्धा बहन, थैंक यू साधना बहन। थैंक यू रेखा दीदी। कपड़ों में जाए सब में चिमटी लगाए है ना, नहीं तो हवा हवा चले सब कपड़ा उड़ जाए। इतना भी मोरियन मैंने सुना।
थैंक यू कोमल बहन, थैंक यू सत्य बहन। सान्ना बहन कहाँ चली गई? सान्ना बहन कुछ कर रहे हैं। सान्ना बहनी कहाँ गई हो? हाँ हो गई बेटा, खाना बन गया। दो क्या तू रोटी बनाओ? हाँ? चावल दो। गरम करो तो चावल तो आप ना उस रूम में गेट बंद करके बैठ जाओ, मैं खाना खाऊंगी तो क्योंकि खाना टीवी चला के हैं? अब ना या कहीं मोबाइल में शांति से देख के पहले बाबू वाली रूम में खाना खाने जाने बहुत बोली अपने रूम में लगा इसमें तो भगवान जी ऐसे बोला करा हमारे रूम में के हला रहा, हमारे रूम में के हला रहा। हाँ नो दीदी, बिल्कुल बिल्कुल आम रहिए, कोई बात नहीं बहना। इसमें गरम करूँगी, पूछ रही हूँ सब्जी गरम है? नहीं रोटी सब्जी खा जैसे मर्जी। थैंक यू कोमल। थैंक यू कान्हा बहन, थैंक यू अनु, बिल्कुल बिल्कुल आना, ये बीच बीच में कमेंट करते रहना बहना। पीढ़ा तुम चटाई किसमें बैठेगी? बेड बताई नहीं। अब भाई बाबू तुरंत ऐसे ही है, तुरंत 2 मिनट के लिए बेड टाइट कर दे ऊपर रख दो तुरंत। बाबू के पास बेड टाल दो, उनके बिस्तर पे बेड रखते हैं। हमें तुम्हें आउटे तुरंत भाषण देंगे हैं। अच्छा रवि की हाँ कोमल बहन, तुमको सरिता बहन हमारी ज्वाइन की है। हाँ, लव मैरिज नहीं है मेरी बहन। मेरा मायका भी इंडिया में है, तो उन्हीं की रिश्तेदारी से हुआ है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, ये कुशीनगर अयोध्या के पास कहीं है, मैं कहीं सुनी हूँ। पानी बोतल ले आऊँ, एक गिलास रख देती हूँ।
मोबाइल चार्ज कम नहीं आना। कोमल बहन, आपको हमारी सरिता बहन ज्वाइन कर ली है, ठीक है। ठीक है, हाँ। उनको कल आके रिटर्न दे देना। नहीं नहीं, सुधा बहन गोरख की लाइन में कुछ नहीं हाँ, रिचा बहन गोरखपुर की थी ना। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि सुनी हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं है कहाँ है। क्योंकि वो रिचा थी, अभी आप बोली तो मेरे को याद आया कि रिचा देवरिया थी। वो किसी बात के लिए बोलती थी कि मैं जा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अभी याद आया, हाँ हाँ हाँ। धन धनी नाग्रयायोध्या तो दाना रज दशरथ हो रामाधान कमसिला झमा कोया मोरे लाल, झमा कोया मोरे लाल। झमकया मोरे लाल, झमकया मोरे लाल हो। ठीक है शारदा बहन, आन रहो, और जितनी आईडी होगी लाइक कर देना। 2 आईडी से तो पक्का ही कर देना। दीदी ठीक है। ठीक है सरिता बहन, आन रहो, जो करना है खाना पीना बनाना है, रोटी पानी खाना है, आप लोग खाइए और आन रहिए। हाँ, क्या? मूली? अभी तो मैंने पापा को दे दी बेटा, आज तो खत्म है मूली, कल फिर संडे कल अचार डाल ले लो। अचार दे दो। हाँ ठीक है। थैंक यू कोमल बहन। झमकया मोरे लाल, झमकया मोरे लाल। कवनारा मैया हमरे घर रहे। बाय बाय कोमल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कवनारा मैया हमरे घर रहे, काऊ बेद से कवनारा। मेरा वॉच टाइम बहुत कम है, कैसे बढ़ेगा? मेरा वॉच टाइम सबसे कम है। थैंक यू दीदी, थैंक यू।
थैंक यू दीदी, थैंक यू। झमकया मोरे लाल, झमकया मोरे लाल। थर थरी कांपेला हूँ। हमें लगता शिव भक्ति दीदी भूल के आई थी क्या मेरे लाइव में? कहीं कमेंट और करना था, कर रही थी मेरे। थैंक यू सोना बहन, थैंक यू। बाय बाय दीदी, घंटा हो। ठीक है सरिता बहन, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय। ठीक है सोना, ठीक है, बाय 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 बाय। बाय 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 सोना बहन, ओ क्या नाम है, श्वेता बहन, बाय 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 बाय। मैं ऑन हूँ। क्या कर रही हो साधना बहन? रोटी पानी खा रही हो? क्या हो रहा है घर में? अरे कोई बात नहीं सरिता बहन, हमने तो ये पूछा नहीं, मैंने तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो विश्वास है हमको। बाय बाय, कोई बात नहीं। आज मैं दो लाइव में म्यूट थी, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रेखा दीदी की लाइव में और कंचन बहन की लाइव में। कंचन बहनी कहाँ हो, आ जाओ। बाय बाय सरिता बहन, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता बहन अभी आऊंगी। आज तो आपकी दिन में चालू थी, मैं पता नहीं किसी की लाइव में थी, मैं सोची चलो दिन में ही टाइम दे देती हूँ। फिर मैं बोली चलो जब देख के दे दूंगी। मैं भी सोच रही हूँ आज टाइम मेरा कम है, दिन में कर लूं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी प्यारी बहन, आन रहो। थैंक यू दीदी। खाना खा ली दीदी? दीदी नमस्ते, खाना खाऊ? साइज 32 रहा 36? साइज 32 रहा 36?
हे रानी बहन नहीं आई, कहाँ चली गई हमारी लाइफ में। हमें मेरे अभी के याद आई रानी बहन के तो। कमने रमैया हमारे घर रही, लाली घुअड़ चित काबर बाबा, घोड़े पीछे भाई ऐसा, लाले घुअड़ चित काबर बाबा, घोड़े पीछे भाई हैं सवार। कौने रंग बेटा तोरी आई ससुररिया, अरे कौने रंग ससु कई दुआर। कौने न रंग बेटा आई ससुररिया, कौने न रंग ससु कई दुआर। सुंदरी सुंदर बाबा बाटै ससुररिया, समारे न रंग बाटी सास। सुंदरी सुंदर बाबा है ससुररिया, समारे न रंग मोरी सास। कहाँ उतारे बेटा तुम पे दुआरिया, कहाँ दुआरे कैचार। ही उतारे बाबा हम कहीं, रतिया भये दुआरे गए चार। काऊ तू खाया बेटा अपने ससुररिया, काहे पई बैठा मोरे बेटा। माखन मलाई खाया बट ससुररिया, चौके पई बैठो मुअरे बाबा। लाले गुअर चित काबर बाबा, घोड़े पीछे भय हैं सवा। कौने बारन बाटी सीता रानिया, कौने बारन उनके बाप। गुअरे बदन बाबा सीता रानिया, संवारे बदन उनके बाप। थैंक यू मेरी प्यारी साधना बहना। संवारे बदन उनके बाप। कऊ चढ़ल बेटा लाया तू सीता रानिया, काऊ बांधे है गाठरी, डोलावा चढ़ल आई सीता रानिया, धनवा तऊ बांधे है गाठरी।
डोलवा चढ़ल आई सीतारानिया धनवा कई बांधे हैं गठ नानी घोड़ी चितकावरे बाबा घोड़े पीछे भाए हैं सावर माला ले लो लेकिन जपना कठिन है माला ले लो लेकिन जपना कठिन है माई बाप और अपने पति की सेवा करना कठिन है माला ले लो लेकिन जपना कठिन है माला ले लो लेकिन जपना कठिन है आनू चलो ठीक है सत्यबन बिल्कुल आन रही है आप आन रही है कौने बरन बेटी यह ससुरारी कौने बनी दर कड़ी बनी उदर कड़ी बनी हर दम रहे उदास रे अब कौन बजाए बांसुरिया न दूर में दूरे सपनों में देखा रेखा दीदी पास सपना झूठा मम्मी झूठी तू झूठा घर संसार रे अब कौन बजाए बांसुरिया मधुर मधुर सपनों में देखा चाची मेरी पास सपना झूठा झूठी घर परिवार रे अब कौन बजाए बांसुरिया मेरे बाबू आ गए मोबाइल रखते बाबू बाबू यही पागल बाबू तो क्या हुआ सपना झूठा मम्मी झूठी झूठा घर परिवार चाय गरम करी पापा चाय हाँ
सपना झूठा मन झूठ दिन राधायो न्याकवना रापद सुरथ राधना सेना विरत यक थाली लड़की ना दो चिलाओ खाना खा रही यक थाली वहां पुलाव धो दी यक तो थाली धो भरी नानी कब है पापा बाय 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 म्यूट तो नहीं ना बाय 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 कौन जर्सी अनन्या बाबू की हम जर्सी ऊपर कहाँ है हल्की वाली देखिए पापा कैसे बता रहे थे अगर टीवी चला दी मन सब पूरी खुली दी कौन से सो अरे ये बर्तन मेरा बैग धोए चाटू फिर मारो देख के देखो सपना झूठा झूठी झूठा घर पे कहीं बैठोगी राई के मना आन हूँ ठीक है साधना बहन आन ही रहो
सतीश भैया आ गया है और लाइक डन। बहन प्रणाम, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्या पापा? दो दिन चाय बना दियो। दो दिन चाय बना दिया। इंदु दीदी वेलकम, स्वागत, राधे राधे, कैसी हो? थैंक यू सामना बहन। नहीं कहा है। अच्छा, प्रोग्राम में हो घरे? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसको बेकार थे। अपन खरिया तो धो दी निकले तो कैसे लिखा आज खरिया है ना? अच्छा, हाँ हो सिस्टर, ठीक है। क्या पापा? वो कोई तकिया फेंक दे। अच्छा, ऐड चलत बा। अच्छा, सतीश भैया ना हमारे पास आए लेंगे नहीं बंद हुआ। ओके करो, लाइव चालू हो जाते हैं। खाना हो गया आपका? नहीं इंदु दीदी, अभी तो रोटी भी नहीं बनी। अभी तो पापा आए हैं। अभी पापा आए, अब शुरू होगा। हाँ, सतीश भैया आपका खाना हो गया? इंदु दीदी आपका भोजन हुआ? हाँ, अच्छा अच्छा, मेरा तो हो गया। अच्छा, अभी तो नहीं हुआ। अभी तो फिर भी ठीक है इंदु दीदी, अभी तो पापा हैं तो पापा तो जल्दी रोटी खा लेते हैं। आज आए, उनको तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। आए, चाय बनाई थी, चाय पी लिए, वो हाथ पैर धोने चले गए। और कहीं मेरे घर वाले रहेंगे तब देखना कितनी देर की बनेगी रोटी। वो तो ड्यूटी से आएंगे, बैठेंगे, फिर नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, उसके बाद बोलेंगे अब रोटी बनाओ।
वो तो और काम में लगाएंगे। पापा तो फिर भी कुछ नहीं बोलते। अच्छा, बस दूध पीना बाकी है। अच्छा, पापा को तो कुछ भी कह दो, पापा से चल जाता है। आम हूँ, ठीक है साधना बहन, ठीक है। हमारे यहाँ कहावत कही गई है, सास ससुर से डरिए नहीं, जेके डर के घर ही ना। हमारा वही काम है कि पापा और मम्मी को नहीं डरना है, लेकिन जिसको डरना है वो अभी मौके पे घर नहीं है। हाँ। यहाँ तक इंदु दीदी ना, कल संडे है तो कल मैं लेट उठती हूँ। कम से कम 6 बजे उठूंगी कल से। कल संडे संडे के दिन उठती हूँ थोड़ा लेट। अगर मेरे हस्बैंड आ गए, अगर पूछ लिए कि पापा सुबह नहीं उठी, अगर पापा बोल दिए कि अभी नहीं बेटा, तब रहना है कि जाना है, तुरंत तैयार हो जाते हैं। चलो अपने मैके अब। लेकिन पापा है वो तो कुछ नहीं बोलते। पापा बोलते फिर क्या हो गया, आज संडे है, थोड़ा लेट से उठती हैं, फिर क्या हुआ। पापा तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते, पापा सीधे हो गए। ये हाँ, पापा तो बोल देंगे बेटा कोई बात नहीं, चलो संडे के दिन थोड़ा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, डेली तो सुबह उठती हैं। थैंक यू सतीश भैया। और इसीलिए मैं फिर से ऐड, अच्छा, और अपना भी मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैं घर को भाग के जाती हूँ। अपना भी मैं बता रही, अब तो इंदो दीदी मैं साथ में ज्यादा रहने लगी। पहले मैं इनके साथ साथ नहीं रहती थी, मैं भाग भाग अपने वहां जाती थी ससुराल। लेकिन अब तो ज्यादा रहने लगी साथ साथ। बहुत कड़क है आपके दे, अरे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारे हस्बैंड जी जैसे हैं वैसे किसी के ना हो। हमारे हस्बैंड जी के एक पीने वाला गैर पीने वाला बराबर है। सास ससुर बेचारे तो, उनको कुछ लेना ही देना नहीं है। और ऊपर से ये भी कहते हैं ना, अरे तू तो भाई इनका इतना बढ़ा दिया था कि ये तो हाँ सबका इम्तहान ना वो कह रही हैं। ऐसे हमारी ये भाषा है। आप इतनी प्यारी हो, फिर क्यों ऐसे करते हैं। बस मेरी सास बोलती है कि जिसको भाई बहन नहीं है वो किसी न किसी से तो लड़ेंगे ही, तो तुमसे लड़ते हैं, तो इसमें क्या है। तो हम भी बोलते चलो ठीक है, बढ़िया है।
और मेरे पापा भी बोलते हैं, हमको भी हंसी लगती है, पापा मेरे बोलते हैं ना कि वो तो चले गए, पता नहीं कैसे सूना सा हो जाता है, रहते हैं तो कुछ नहीं करते, बोलते तो रहते हैं घर में। मेरे को बड़ी हंसी लगती है जब पापा ऐसे बोलते तो। थैंक यू सतीश भैया। सतीश भैया पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अकेले हैं क्या? हाँ हाँ अकेले हैं, तभी तो इतना कड़क है, अकेले हैं माँ बाप के। एक दो होते ना तो देख के भी दिमाग थोड़ा पलट जाता, लेकिन क्या बोलते, क्या बता रहे सतीश भैया, आके 2-4 दिन रहो फिर आपको पता लगेगा कि कैसे तुम सुधा बहन करती हो। अगर बोलती ऐसी बात को है, मैं बता रही हूँ आपको किस क्यों बोलते हैं। जैसे मान लो एक कपड़ा लाई उठा के, ऊपर से ले आई, थोड़ा कहीं व्यस्त हो गई या किसी से खड़ी हो गई, कपड़ा नहीं रखी कपड़ा के जगह पे, तो ये बताओ दूसरे काम में लग गई, पहले ये काम कर लेना था फिर तुमको दूसरे काम में लगना था। हम भी बहुत हम भी बहुत बोलते हैं, मत बोला करो सतीश भैया। कोई बहन भाई नहीं है, हाँ कोई नहीं है, शारना बहन अकेले हैं, आमी ठीक है, सर चढ़ कर रखा है। सास ससुर जी ने सास ससुर जी ने, इंदु दीदी बोलते हैं ना, सास ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मैं झूठ क्या बोलूं। मम्मी पापा कुछ नहीं, मम्मी तो हमारे ही तरफ रहती है, मम्मी तो इनका चले तो हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाता, लेकिन ये मम्मी के कारण में मतलब इसमें लगी हूँ। मम्मी पापा बोलते क्या हुआ, करने दो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तब मैं इसमें लगी हूँ, नहीं तो उनका होता तब तक कपड़ा बंद कर देते। मम्मी भी बोलती है कि मत बोला करो थोड़ा, जो बोलते हैं तुम ध्यान से सुन लिया करो बस। लाओ पापा। संध्या बहन कितनी खुश है, दूसरे मोबाइल से दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है ठीक है ठीक है। लो कब्बू कब्बू के करीब राज ने जाग गई हैं। सब्जी है सब्जी, चावल नहीं। अदरक नहीं है सही कब है, तो तरह पेट लेके कब तो संडे है, कब तो छुट्टी है ये। बस पापा देखो, अरे बस 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 बस। और क्या गिलास, ये दो नहीं नहीं, हम लाओगे।
क्या बन रहा है? कुछ साल रुको, हम तो आज खिचड़ी खाए। आज मेरे यहाँ सुबह बना था आलू पराठा भैया। फिर उन्होंने बोला कि ये आलू पालू का पराठा हम नहीं खाएंगे। ये तो हमारे फिर तो बोले कि तुमको कौन बोला आलू का पराठा बनाने के लिए? तो मैं बताई कि आज पापा बोले कोई बात नहीं, थोड़ा आलू का पराठा बना लो, तो बोले नहीं, सब्जी दाल मटर की सब्जी बनाओ। फिर इस टाइम में सोची क्या बनाऊं, की सब्जी बनाओ, दाल चावल सब्जी बना। फिर इस टाइम मैंने बना, फिर मैं बोली क्या बना के दूं आपको ड्यूटी के लिए? तो बोले ये पूछने की बात है क्या बना के दूं? ये पूछने की बात नहीं है, घर में सब्जी की कमी है। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो बनाया, क्या बोलते हैं, अरे अपने यहाँ क्या होता है वो, सेम। फिर मैंने सेम की सब्जी बनाई, तो बोले कि सेम ओम हम नहीं ले जाएंगे। तो मेरी बच्चों बड़ी वाली लड़की बोली मम्मी मेरे को सेम की सब्जी दे दो, मैं खाऊंगी। तो मैं बोली मटर की सब्जी रखी है, ले जाओगे? बोले चलो दे दो, उसको दे दो। तो इस टाइम मटर सेम की सब्जी पापा और हम लोग खाएंगे, वो ले गए मटर की सब्जी। बच्चे बड़े होने दो, सब काबू में आ जाएंगे आपके देवता। अरे कुछ नहीं, आएंगे नहीं, कोई नहीं आएगा। हमें तो नहीं लगता चाल ढाल से कभी आएंगे, मुझे तो नहीं लगता। ड्रिंक तो नहीं, नहीं, ये कुछ भी नहीं खाते पीते, तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। बस कुछ मतलब ऐसे कामों के लिए, मतलब अब कैसे आपको बताऊं, इसके लिए तो है ना, खाएंगे ना पिएंगे। और अब हम कैसे बताऊं आपको, पास होती तो खिचड़ी चोखा खाए हैं, हाँ खिचड़ी। अच्छा मटर आ गई है ना, तो सब मिला के गोभी वोभी की खिचड़ी बनी रही थी, हाँ अच्छी लगती हो तहारी। और बोलेंगे किसको, बोलेंगे हमको बस, ना पापा को ना मम्मी को, और किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चों को भी नहीं कहेंगे। लेकिन हमसे तो बोलते रहते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ काम ऐसे कर देती हूँ, करते करते मेरा डूब जाता है, तो मैं अपने पे ही बता रही। मैं उसको टाल भी देती हूँ, मैं बोलती मैं नहीं करूंगी, बस रोज रोज वही काम करना रहता है। नहीं वो नहीं, तहरी नहीं, खिचड़ी बिल्कुल। अच्छा, अरे भैया मैं तो मेरी, अब आपको क्या बताऊं, ओ, सतीश भाई मेरी शादी जब से हुए, मैं अपने ससुराल जब से आई, खिचड़ी मेरे यहाँ नहीं बनी। मैं क्या जाती हूँ तो खा लेती हूँ, लेकिन ससुराल में बस अपने आप को शौक लगे तो दिन में बना के खा लो, नहीं तो नहीं। हाँ सही मैं बता रही हिंदी दीदी ना, इसीलिए लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है। जैसे उनका कुछ काम अलग है, मेरा कुछ काम अलग है, बस यही है। उनका मतलब रहता है कि डेली अलमारी पोछो, सारा सामान पोछो, ये सब मैं नहीं करती रोज रोज, बट रोज रोज मेरा काम नहीं करने का मन। और वो कर लेते हैं, मैं नहीं करती, वो करते हैं। मैं ये भी बता रही हूँ, अपनी भी गलती बता रही हूँ कि मैं कम काम करती हूँ, वो ज्यादा करते हैं। और जितना कहेंगे उतना बोलते भी हैं, ये भी बता रही हूँ। बस मेन लड़ाई यही है मेरे घर की।
अरे अजय भैया आ गए, वेलकम, स्वागत, राधे राधे। आज मैंने कमेंट किया था, अजय भैया पढ़े थे, कमेंट मिले थे। चावल उड़द की दाल रोज कैसे करोगी सिस्टर और बहन, काम करते हैं घर में, बहुत काम होते हैं। लाइक डन, अच्छा। हाँ मुझे पता चल गई, उड़द और दाल की खिचड़ी। खिचड़ी में बोला बनाओ, अच्छा हाँ बढ़िया किए, कभी कभी खाना चाहिए हर चीज। राधे राधे। और अजय भैया कैसे हो, बहुत दिन बाद कैसे आए आप? कहाँ चले गए अजय भैया, कहीं दूसरी जगह चले गए क्या आप? प्रेम से बोलो। अरे भैया, मेरे घर में रोज लड़ाई होती है, मैं क्या करूं, मैं भी एक दिन की तो रोक के डालूं कि मेरा सब लोग करो, सपोर्ट करो। कोई नहीं, मैं लेके आ जाता हूँ। अच्छा। राधे राधे, थैंक यू। इंदु की भी गलती नहीं है, ये काम मेरी सास डेली करती है, डेली करेगी, वो डेली करती है, तभी माँ बेटे थे, उनका भी आदत पड़ गया है करने के लिए, मेन बात यही है, और मेरे से नहीं हो पाता। मैं कर भी नहीं पाऊंगी जिंदगी में ये काम कि डेली करना है। और मेरा घर गांव में ही है, ऐसे नहीं है रोड पे है मेरा घर, लेकिन मेरे घर में कभी चली जाओगी तो ये नहीं लगेगा कि हाँ मिट्टी रास्ता है कि पक्की रास्ता है। जब भी जाओगी ना तब भी पूरा, मम्मी जब पता नहीं, मम्मी वही काम करती है, मम्मी हमेशा हमेशा मम्मी साफ सफाई में लगी रहती है, हमेशा। मैं भी जाती हूँ तो मम्मी अपना काम नहीं छोड़ती, मम्मी बोलती कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ। तो यही बात है, और मेरे से नहीं हो पाता इतना काम। बस मेन बात यही है इंदु दीदी, और कोई बात नहीं है, न किस लिए बोलते नहीं है, बस यही मेन बात। मैं डेली नहीं कर पाती। गांव गए हो क्या? नहीं गांव नहीं गई हूँ अजय भैया, यहाँ भी तो काम रहता है। तो मैं इसमें फंस गई तो थोड़ा इसमें भी सपोर्ट करना रहता है, वीडियो डालना रहता है, तो इसलिए ज्यादा, और यहाँ भी काम करना। और बताओ, सब बढ़िया अजय भैया? बहुत बढ़िया। ये नहीं है कि मेरे साथ नहीं लगेंगे, मैं किचन में रहूंगी तो वो सारा काम कर देंगे, लेकिन हाँ बोल बोल के करेंगे, और काम तो सारे कर देंगे, ये नहीं 15 दिन तो पूरा मेरे साथ लगे रहेंगे, मेरा घर पूरा चमकेगा। हाँ लेकिन बोलेंगे, बस यही एक आदत गंदी लगती है मेरे को, कि मत करो, बोलो मत, मैं खुद ही काम करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। अजय भैया आपका खाना हो गया? आदत होती है अपनी अपनी, हाँ बस यही बात है। खाना खा लिया आपने? नहीं, पापा खा रहे रोटी, पापा खा रहे हैं। ठीक है साधना बहन, इतना मत दो, कल भी दे देना, कोई बात नहीं, जो करना है कर। बुरा ना माने इनको, ये सब कोई टेंशन नहीं है इस सब से उनको, अभी होते फिर भी मैं बताती तो उनको इससे कोई असर नहीं पड़ता। हम उनके सामने भी उनकी बुराइयां करती रहती हूँ। ये भी मेरी आदत है, उनको बोलते ही मेरे को कोई असर नहीं है, वो तो तुम जानती हो, तुम्हारा दिल जानता है मैं कितना अच्छा हूँ कितना खराब हूँ। ये भी कहते हैं।
ये भी कहते हैं कि तुम खुद जानती होगी कि हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, तो तुमको खुद ही सारी बात हमारी तुमको पता। हे भगवान, हाँ वो रहेंगे फिर भी मैं बोल देती हूँ सबको उनकी बात मान कर भी क्या कर सकती हैं। गजब हुआ। गजब ही आप भी। वो तो मम्मी रहते हैं पापा रहते हैं घर में, मतलब 4 ही लोग हैं। मम्मी रहेंगी पापा रहेंगे और मैं भी रहूंगी, वो भी बैठे रहेंगे, तो जो कुछ बोलेंगे तो मैं बोल देती हूँ, सारा सामने सामने बोलती है। तो मम्मी इसीलिए तो मेरी बात का विश्वास करती है। मम्मी बोलती सुधा में एक ही कमी है कि सुधा मुंह पे बोल देती है, चोरी चुपे नहीं बोलती, और तुम बाद में बोलते हो, उसके मुंह पे नहीं बोलते हो, बस यही बात है। और वो है तो सारा अपने अंदर का बस निकाल देती है 2 मिनट में। हाँ सास तो मेरी तरफ रहती, पापा भी मेरी तरफ रहते हैं, अकेले वो खुद रहते, बोलते हैं अकेले क्या बोलूं, सारा परिवार तो उन्हीं की तरफ हो गया। चैनल, हाँ जय भैया, चैनल मुनो हो गया। इसमें पता नहीं क्यों डबल आवाज आ रही मेरा। आप लोगों के प्यार दुलार से मेरा चैनल हो गया मुनो। कोई बात नहीं, ये रिश्ता होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। नहीं पहले तो इंदु दीदी बहुत ज्यादा बुरा लगता था, बहुत, मतलब मेरा रहना बड़ा कमाल लगता था, मैं सोचती कैसे इस घर में रहूंगी। मेरे को कोई बोलता था तो बहुत बुरा सा लगता था, लेकिन रहते रहते बोलते हैं कि जिस चीज में ढल जाओ उसमें तो ढलना ही पड़ता, तो फिर अब तो आदत पड़ गई, अब तो कोई भी बात हमको बुरी नहीं लगती। और जवाब भी देती हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। ये भी है। सिस्टर ससुराल तो ससुराल होती है, हाँ ये तो है। थैंक यू सतीन सिंह। जय श्री राम। अजय भैया कमेंट बताए नहीं, आप कमेंट पढ़े थे मेरा, मैं आपको दी थी तो। पर सभी आपके अपने हैं, हमेशा याद रखा करो। हाँ ये तो है। अच्छा अच्छा। मैं आज आपका हेरी थी, मैं सोची चलो आज हेरती हूँ अजय भैया का मैं, फिर ढूंढ के आपको कमेंट की थी। 29 रुपए का मेंबरशिप ले लिया हूँ। अच्छा, मेरे से आए 1 महीने के लिए। टीवी की आवाज तो नहीं जा रही है, जस्ट लिया हूँ मेंबरशिप। अच्छा सतीश भैया, टीवी की आवाज तो नहीं जा रही है, पापा देख रहे हैं समाचार, तो मैं आ गई इस रूम में, पापा वाले रूम में, लेकिन आवाज तो नहीं जा रही। नहीं, अच्छा अच्छा। घर का बुराई मत करो, आपके घर है। नहीं आ रही, अच्छा ये अजय भैया होता रहता है, हम कोई घर की ये कोई बुराई नहीं है, ये तो चलता रहता है।
वो तो बोल देंगे कि तू ही जानती है, वो उनको कोई फर्क नहीं। हाँ कमेंट पढ़ा था, अच्छा तभी आ जाए। कहाँ वो लखनऊ में हो कि वहाँ कहाँ थे आप? हाँ पापा आई। रुक जाओ आप। सोई। हाँ आपको ज्वाइन किया हूँ। अच्छा 29 रुपये में आपको लगभग 18-20 पॉइंट मिलेगा। अच्छा सोई गई, सोई गई अनन्या। हम्म अच्छा 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 मेंबरशिप 29 का लगाया है क्या? हाँ हाँ वही तो बता रहे हैं इसलिए। लखनऊ में 50 दिन से। अच्छा अच्छा अजय भाई ज्वाइन, रिटर्न मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम कुछ ना करते हम। अबे पापा रोटी खा लिए तो फोन करें। हम्म हम्म हम्म। हम्म, पता नहीं हम नहीं जाने तो वो लोग पता हो गया है। हाँ वो मैं लिखेगा हुई ज्वाइनिंग ना तब वो जान गया भाई हम। हम्म हम्म।
अच्छा, घर पे सब लोग ठीक है? हाँ भैया, सब लोग ठीक है। गोलू का नहीं पता है। गोलू सो गई है। अच्छा, और बताओ, सब बढ़िया? सब बढ़िया है। नहीं, सतीश भैया गोंडा का हुआ और अजय भैया। गोलू मेरी छोटी बिटिया का नाम है। अच्छा, अभी ड्यूटी पर आ गया हूँ। अच्छा, शुदा बहन, आप हमको यज्ञ दीजिए। अरे मैं तो साना बहन कब से बोली कि जाओ आप, कोई बात नहीं। मैं तो एक दिन में इतना थोड़ी दी थी टाइम आपको, 2 ही घंटा एक दिन में दी थी बस। अच्छा, अजय भैया ड्यूटी पे आ गए कि ड्यूटी करके चले गए? पापा आ जाए तब जाऊँ इनके रूम से। चमन यार, आईफोन के लिए ठीक है सुधा बहन, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी प्यारी बहना, गुड नाइट। साधना पांडे नेपाल से हैं? हाँ। क्या? हाँ, नेपाल से हैं। थैंक यू, थैंक यू। सतीश भाई, आपका गाना चल रहा है, म्यूट है, मैं चला दे रही हूँ। क्योंकि इन्हीं के आईडी पे आपका चला दे रही हूँ मैं। ये मेरा सतीश भैया ना, मैं आपसे पूछी, आपने बताया नहीं। वो जो मैं बंद करती हूँ ना, जैसे लाइव मेरा वॉच टाइम बहुत कम है। मुझे पता नहीं था, पहले देखना भी नहीं आता था। जब मुझे पता हुआ तो मेरा बहुत कम है, तो सब बोले कि ज्यादा पूरी रात ऑन करके रखो, फिर आपको मिलेगा वॉच टाइम, नहीं तो आपका हट जाएगा मनो। तो जब मैं बंद कर, नेपाल तो हमारे बगल में है। अच्छा, नेपाल आपके बगल में है? दो नेपाल है क्या? वो क्या बोलते हैं, ये जब लाइव बंद करती हूँ, ओके करती हूँ ना, तो पता नहीं मेरा पहले वॉच टाइम मेरे को पता लगता था, आज मुझे इतना मिला। अब पता नहीं कैसे ना, जब बंद करती हूँ ओके का, तो चालू हो जाता है, पता नहीं कैसे अपने आप ही। पता नहीं क्यों ऐसे हो गया है मेरे में अब। दूर है मेरे यहाँ से? अच्छा, आज ड्यूटी नहीं है? अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे लाइव में क्यों नहीं आते अजय भैया? क्यों नहीं आ रहे थे, ये तो बताए नहीं आप कि आ क्यों नहीं थे इतने दिन से? जब मैंने आज कमेंट किया फिर आप आए। मैं तो सोची कहाँ चले गए। थैंक यू इंदु दीदी, थैंक यू।
आप स्टूडियो पर देख लिया करो। हाँ वही तो देखी तभी तो पता लगा, पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। पहले बहुत बढ़िया रहता था मेरा। एक नहीं नेपाल है। अच्छा मैं सोच रही कि वही नेपाल। हाँ कभी कभी यहाँ नहीं दिखता। अच्छा थैंक यू इंदु, थैंक यू। घर पर गया था अभी तो गांव से आया हूँ। घर पर काम बहुत बिजी हो गया था। पापा मम्मी के फोन और बात कर लियो ठीक करे रही ना भाई, कहीं ना रोटी वोटी खा ले। तेरी जैसी यार कहाँ। लाइव आना बंद कर दिया। अच्छा मम्मी गांव में है क्या? हाँ हाँ सतीश भैया मम्मी गांव में रहती है, फिर भी मम्मी मेरी तरफ रहती। वही ला के रखे थे। अब आ रहा आप में, आपके गाने में ऐड लास्ट में। मम्मी अकेले गांव में रहते हैं सतीश भैया, मैं पापा और ये दोनों बच्चे, मियाँ बीबी, हम समझो दोनों बच्चे, पापा यहीं हैं और मम्मी गांव में। फिर से आपका गाना चलने लगा। ताला वाला देख लियो है? हाँ ठीक है पापा, अभी हम छत पे जाते देख लियो। मम्मी को भी बुला लो सतीश भैया ना। मम्मी आई, मम्मी यहीं रहती थी पहले। मतलब अब आप तो नहीं जानते होंगे, मम्मी पहले यहीं रहती थी जब देवरानी जिठानी के साथ थी। सब लोग घर में अलग हो गए तो घर गांव में बन गया, तो वहां मम्मी रहने लगी। और यहाँ भी मान लो मकान बन गया तो थोड़ा अब दिक्कत होने लगी। मम्मी बोलती नहीं यहीं रहूंगी। हम लोग बोलते हैं कि आ जाओ। ये है ये तो ओका तो हम भूल गए ना आज। दो दिन पैर पोछिन कहीं ना का सब धो आज। अच्छा हाँ तो वहाँ मतलब सब कुछ, वहाँ भी, वहाँ ज्यादा व्यवस्था है, यहाँ भी है लेकिन अब यहाँ है तो मकान ही खड़ा है और यहाँ ज्यादा उतना सामान वामान नहीं है, तो मम्मी बोलती है कि सब तो यही है, इसलिए मम्मी नहीं आती। और आई थी, अब आपको भी पता होगी गांव की मजबूरी की, मैं जाऊं तो मम्मी आए, और बच्चे अभी छोटे हैं, आपको भी पता है। मकान कहाँ है, मतलब जहाँ मैं यहाँ पंजाब में भी बनवा ली और गांव में भी बिल्कुल रोड पे घर बना है, तो वहां भी डर लगता है। और आप तो जानते ही हो वहाँ मतलब कोई ना, मतलब हमारे भैंस वैंस नहीं है, जैसे गांव में सब लोगों के गाय है भैंस है, और खेती भी करना ये सब काम कोई नहीं है सतीश भैया। घर पे भी मतलब जैसे हम यहाँ रहते हैं वैसे वहां पे भी है। फोन आ रहा है, बात, हाँ ठीक है अजय भैया बात कर लो, बात भी जरूरी है बाहर रहने पे। बिल्कुल आप बात करिए अजय भैया। तो वहां भी जैसे हम यहाँ रहते हैं, डबल आपका गाना चल गया, ये देख लो। तो जैसे यहाँ है वैसे वहां भी है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट, अरे राम रे देख लो, मैं आपका गाना सुनी कमेंट नहीं छोड़ी।
कमेंट छोड़ दूं फिर आपको पता चलेगा कि सुनी है। बहुत सुंदर। पहले मम्मी यहीं रहती थी तो यहीं पढ़ाई वढ़ाई भी वो किए हैं। मत करो कमेंट। नहीं, मैंने इनके वाले से कर दिया। पहले यहीं रहती थी मम्मी और यहीं ये ज्यादा दिन यहीं पढ़े लिखे हैं। हम लोग तो ज्यादा दिन बाद मम्मी यहाँ से गई है ना। पहले सब लोग यहीं रहते थे। अच्छा, हाँ। हमारे यहाँ सब लोग यहीं पे हैं। पापा के 5 भाई हैं तो सारे मतलब यहीं हैं। सबका मकान वकान बना हुआ है सबका। मेरी बड़ी मम्मी पापा भी वहाँ। मैं तो बोल रही थी कि आ जाओ सतीश भैया। तो आप बोले थे कि हाँ आऊंगा, लेकिन आप आए नहीं। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो समराला चौक के पास। अच्छा, हाँ हाँ, समराला चौक है। हाँ, जान गई जान गई। अच्छा। और हम लोग रहते हैं, वैसे तो गोविंदगढ़ बोलते हैं, लेकिन इसे पूछोगे तो बताएंगे। हम लोग जोगियाना फाटक पे रहते हैं। हम लोगों के बोलते जोगियाना फाटक। और कोई पूछेगा तो एक है तो मंडी गोविंदगढ़ उसे बोलते हैं, तो बहुत लोग मंडी गोविंदगढ़ बोलोगे तो मंडी गोविंदगढ़ जानेंगे। लेकिन ऐसे बताना चाहिए गोविंदगढ़, तो जान जाता आदमी। गया हूँ मैं भी प्रोग्राम में। अच्छा। हाँ, उस टाइम तो कोई पता भी नहीं था जब आप आए रहे होंगे तो। जोगियाना सुना हूँ, याद नहीं है। अच्छा, नहीं याद है किधर है। समराला चौक से 10 रुपया किराया लगता है। ये किधर है जोगियाना? आप अगर समराला चौक पे बैठोगे तो बोल दोगे जोगियाना फाटक उतार दो, तो 10 रुपया किराया लेते हैं। हम लोग जाते हैं समराला चौक, वहाँ सत्यम हॉस्पिटल है तो हम लोग वहीं जाते हैं दवा कराने। समराला चौक थोड़ा शहर में आता है। ये किधर है? शेरपुर सुने हो? शेरपुर। शेरपुर जानोगे फिर जान जाओगे। ये अजय भाई जो आए थे, इनको सारा पता है यहाँ। इनको सब पता है। शेरपुर, हाँ हाँ, तो बस वही है। तो सतीश भैया, जब आपके मम्मी पापा रहते तो गांव में आप इतना महंगा सामान खरीदते होंगे। मान लो बच्चे हैं आपके, दोनों बच्चे हैं,
और वैसे तो यहाँ से ले जाया करो सामान। हाँ टंडारी से, हाँ। सामान यहाँ से ले जाया करो, बढ़िया बढ़िया, कितना बढ़िया यहाँ सामान मिलता है और सस्ता। एक बार आया करो, सामान यहाँ से ले जाया करो। यहाँ तो कितना बढ़िया सामान मिलता है। ठंडी वाला कपड़ा तो बहुत बढ़िया मिलता है सतीश भैया यहाँ। थैंक यू इंदू दीदी, थैंक यू। यहाँ जैसे आपने लिए जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, बच्चों के लिए कपड़ा हो गया, जनानी के लिए भी स्वेटर, साल, ये सब बहुत अच्छा मिलता, बहुत ज़्यादा अच्छा। और बहुत स्टैंडर्ड लोगे तब 500 में इतना स्टैंडर्ड आपको कि मैं क्या बताऊँ। और कभी भी उसमें रोया भी नहीं छोड़ेगा। साल स्वेटर के लिए तो फेमस है लुधियाना, पंजाब। पंजाब तो बहुत दूर तक है, लेकिन लुधियाना इस चीज़ के लिए फेमस है, ठंडियों के कपड़े के लिए। हाँ। बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए तो एक से एक स्वेटर, और जनानी के लिए साल, कंबल, और ये क्या बोलते हैं, ठंडी में रजाई का कवर हो गया, और गद्दे का कवर हो गया। ये हम कहते हैं खराब होने वाला चीज है ही नहीं है। आप चाहे जितना दिन इसको यूज करोगे। ये चीज तो मेरी गारंटी है। गांव में कंबल मिलता है इतना महंगा, यहाँ किलो के हिसाब से कंबल मिलता है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 8 किलो, मतलब जैसे लो आप। और बच्चों के लिए जूता, चप्पल, और मतलब हम लोगों के लिए भी ऐसे नॉर्मल चप्पल 100-100 रुपए का बहुत अच्छा, मतलब कुछ सामान यहाँ बहुत अच्छा है, बढ़िया रेट पे मिलता है। और ये भी यहाँ नहीं है सतीश भैया कि आप आओगे तो रोटी नहीं मिलेगी लुधियाना में। आज इस तार भाभी का दिया है, भेज दियो, बोल दो। हाँ, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो मिलो तो मैं कुछ चीज दे देती हूँ, मैं तो ले जाती हूँ, सच बात तो यही है। मेरे को जब आप बोलो, जो चीज बोलो उसको भी मैं ला के दे सकती हूँ। अब जा रही हूँ। हाँ, पंजाब में सामान सस्ता है। ठीक है, ठीक है। हिंदू दीदी, बाय बाय। सभी को राधे राधे। बाय 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 बाय। बाय बाय। मैं बहुत लोगों के लिए लेके गई हूँ, जैसे जो मिलने वाले हैं, जो हमारे गांव के कुछ लोग हैं थोड़ा, मैं जिसको जानती हूँ उनके लिए तो मैं लेके जाती हूँ। जैसे गांव में भी कुछ लोग हैं ना, तो मैं बताती हूँ तो बोलते हैं, तो मैं सतीश भैया ले जाके दे देती हूँ, सच तो बात यही है। अभी तो मैं किसके लिए जैकेट इनसे बोल के भेजवाई थी, जो ऐसे जाता है, ऑनलाइन नहीं जाता, लिफाफा में करके जाता है, तो ये ऐसे किसी को 1400 की जैकेट भेजे थे।
आप भी बताना, आपको भी जहाँ। अरे आप तो आते ही होंगे अयोध्या, मेरे घर से अयोध्या ज्यादा दूर थोड़ी है, मुश्किल से घंटा लगता है मेरे घर से अयोध्या आने में। शिव भक्ति की लाइव आज कहाँ चलती है। बड़ी मम्मी जब शादी वगैरह होती है तब आती हैं। अच्छा, हाँ ये तो मैं मानू, कम जाती होंगी गाँव ना। अयोध्या तो आता ही रहता हूँ। हाँ वही तो बोल रही हूँ। हम अयोध्या आते हैं तो सुबह सुबह आते हैं, बहुत ज्यादा सुबह रहता है घर से। अभी तो गया था 18 को, 19 को आया हूँ। अच्छा, मेठी गया था। अच्छा, अब मैं आऊंगी तो मतलब आती तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं यहीं से जब जाती हूँ तब जाती हूँ, क्योंकि ये जरूर जाते हैं तो मैं भी साथ में तो जाती हूँ। आ जा तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन सुबह थोड़ा जाती हूँ मैं, 8 बजे तक घर वापस आना रहता है। जाती तो हर साल हूँ, हर साल में। अब मेरा मई में टिकट है, मई में जाऊंगी। तो आप कब आते हो? इनके यहाँ शादी वादी यहीं करती हैं कि गांव से शादी वादी करती हैं सबकी? सतीश भैया, गांव से बड़ी मम्मी आपकी शादी वादी करती हैं कि यहीं से? एक ही, एक लड़का और एक लड़की है, उनको लड़की की शादी हो गई है, लड़का वही है। अच्छा, तो यहीं करती हैं कि गांव में शादी? गांव में हुई है। अच्छा,
गांव वाले लोग तो गांव में ही करते हैं ज्यादा। दीदी मेरी से 1 डेढ़ साल बड़ी हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी भी तो शादी बहुत जल्दी हो गई थी भैया। जब आपकी शादी जल्दी हो गई तो उनकी भी शादी, वो तो लड़की थी, और जल्दी कर दिए होंगे लोग। मेरी शादी और उनकी शादी 1 सप्ताह में ही थी। अच्छा, कि सब लोग आए रहेंगे, हो जाएगा। अच्छा, दस मई की उनकी और मेरी 14 मई को थी। अच्छा, गर्मी के दिन में शादी हुई थी आप लोगों की। फिर हमारे यहाँ रेखा दीदी की शादी हुई थी तो नहीं, रेखा दीदी की शादी नहीं, रेखा दीदी की शादी तो हुई थी गौना, उनका साल अंदर में गया था। उनका भी पता नहीं कितने ओंट पड़ रहा था, उसी दिन उनका गौना गया था, गौन गया था रेखा दीदी का। इतनी ठंडी बारिश हो रही थी दपक के, बहुत ठंडी थी उनकी गौन में। उनकी भी शादी गर्मी में हुई थी, रेखा दीदी की भी। बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, ठंड थी। हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम ठंडी में ज्यादा होता है। मेरा भी साल अंदर में गौना आया था। अच्छा, उनका भी साल अंदर में गया था। पहले ऐसे चलता था। मेरा भी साल अंदर में आया था, शादी हुई थी 1 साल बाद आया था गौना। दीदी की विदाई शादी में थी। अच्छा, मम्मी तो मेरी इतना परेशान रहती हैं कि
अब जितना सिस्टम हो गया मिला तो फोन दूसरे फोन से शिव भक्ति बहन की लाइव में हूँ। आज सुबह बहुत देर तक दे के गई थी, आज टाइम पता नहीं ना, सब बोलते कि इसमें कम मिल रहा है, तो मैं सोची चलो कल एक दीदी बोली ऑन करके सुधार रखा करो अपनी लाइव, नहीं तो तुम्हारा हट जाएगा मुन्नो। अच्छा हाँ, हंस क्यों रहे हो फिर? मम्मी को मैं मिला रही तो मम्मी उठा नहीं रही मेरी। लाइव के चक्कर में बात नहीं हो पा रही है इसलिए हाँ सही बात। हेलो हेलो नमस्ते मम्मी। और बट हाँ पता तो है। हैं बोलो मम्मी। अरे नहीं, हम दूसरे फोन से फोन लगा देने इनके वाले से, वही से बात होती है लाइव में, तो चालू है लाइव। नहीं उन्हीं कैसे है, उन्हीं कैसे और वो भी भले हैं अथर्व। अच्छा सोई है। अच्छा, सोनू और सब बढ़िया है। हाँ वो ड्यूटी चला गई। हम जाने मम्मी यही बात पूछे कि ना हम लगे फोन लगाई हुई है कि हम बात कुछ ना रही, बात है ना सुनो। परसों हम बनाए नु काव कहा जाता है, नहीं कल बनाए रहन की, कल है बनाए रहन, कल हम गए मार्केट, कहीं चलो आप चली घूमे, तो हम कहें चलो घूम ले, तो कहीं कि खाना बना लियो, हम कहें ठीक है खाना लाओ बना ली, तो हमसे सुबह कहीं रेडी रहे हो। हम जाने नहीं कि वो रहे भैया मम्मी बात ना की नहीं है, नहीं हमसे सुबह कहीं चले कहे घूमे आज, तो हम कहें ठीक है, तो कहीं रेडी रहे हो, हम कहें ठीक है, तो हमसे कहें ऐसे करियो खाना बना लियो, नहीं तो आवत हो तो थक जाए तो बहुत परेशान हो, पर हम कहें ठीक है, तो हम गाँव को दाल बनाए चावल बनाए आटा सानन और क्या कहा जाता है पापा मूली लावा रहे थे, हम सोचे चलो मूली का पत्ता फेंके से अच्छा हम साग बना दिया है, सब्जी ना बनाई, तो हमसे पूछी नहीं कि रोटी खाना का बना है, तो हम बताएं कि दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ हाँ, तो कहें चलो अच्छा ठीक है, तो पते पर आटा हम रख के गए, हमें पता रही कि रोटी ठंडी खाई है ना वह, तो हम पूछें कि रोटी बना ली, तो कहीं तुम्हें पता है कहे बार बार पूछा थी कि रोटी बना ली, तो हम कहें ठीक है, तो आए तो कहीं सब्जी दियो, तो हम कटोरी में जब दाल निकाले ना चार चार दिन मूली काटे, तो कहता है सब्जी काहे नहीं देते हो, ये सब कहे देते हो तुम, तो हम कहें कि तो हम निकाल के सब्जी देना, हम कहें तो हाथ ना है, तो ओके फोटो ओके वीडियो बनाता है, तो हम कहें क्या वीडियो बनाता तो कहा था तेरे मम्मी के लेके वीडियो जाइए, हम कहें का आज हम सुने कि सब सागे को सब्जी बोली जात है हाँ, तोरे यहाँ सिस्टम हो यार, तोरे यहाँ बोली जात है का, तो हम कहें कि पता नहीं, हमें तो इतना पता नहीं ना कि सागे के मम्मी है का बोलत रही,
कुछ तो बोलते नहीं हुए हैं, सब्जी हम कहें ना सब्जी बोली जात हुई और का बोला जात हुई यही तो कहीं ना अच्छा हमका नहीं पता रही तो रही है सब्जी बोली जात है साग का। हाँ तो कहीं ठीक है कोनो बात ना है तो हम कुछ ना बोले अपनों कुछ ना बोले खाना वाना खाए तो कहीं कि चलो अब काम ना करो चलो आराम करो। अच्छा तो हम कुछ बोल बना रहे तो फ़ोन सुबह आए ड्यूटी से कुछ बोले चाले नहीं गए ड्यूटी शाम के तो सुबह आए तो मम्मी के पास फ़ोन लगाए कहें मम्मी कहें कहा भैया सुबह रहना तो कहें कहा भैया तो कहें कि साग एक का बोला जाता है सब्जी बोली जाता है साग बोला जाता है। तो मम्मी कहें तो कहें भैया के कहत रहा तो बताइन कहें कि एक आदमी रहा साग का सब्जी कहत रहा। तो मम्मी को तो पता तो मम्मी को तो पता है तो मम्मी कहिन कि नहीं केहू और ना कहत रहा हुए ई बात सुधा कहत रही हुई हैं। मम्मी यह बात पे मम्मी कहीं नहीं भैया केहू और ना कह सकते ये बात सुधा कहीं हुई है क्योंकि सुधा जब सब मना ही रहते सुधा ही कहीं हुई है कहीं नहीं मम्मी सुधा तो कुछ ना बोली सुधा ये सब कुछ ना कहें सुधा तो सब्जी कहा थी। तो हमारे हंसी लागे तो मम्मी कहीं सुधा फोन दियो तो हम बताएं तो हम कहें हाँ मम्मी हम तो बनाए रहे हैं तो कहीं का बना है तो हम ये ऐसे बता रहे हैं कि सब्जी चावल दाल रोटी सारा सामान तो मम्मी कहें साग का साग कहा जाता है सब्जी ना कहा करो। तो हम कहें ठीक है तो कहें ठीक है कोनो बात नहीं तोहरे लगे फ़ोन तुरंत लगाएं तो कहें कि लो तोरी मम्मी से पूछी कि सब्जी कहा जाता है साग का साग कहा जाता है। तो हम कहें कि हाँ तो अच्छा हाँ अच्छा देखो वही बात तो कहो कि चाहे साग का सब्जी का हो चाहे साग का हो ना तो कहा था तो जब तोरे लगे फोन करी तो तुम कहो कि हाँ भैया सूखी सब्जी का झल साग कहा जाता है तुम यही बोले वो। तो हमसे कहीं सुधा तो हमसे तो कुछ हमसे आए तो कहते हैं सुधा तोरी है तो साग का साग कहा जाता है सब्जी की सब्जी कही जाता है। तो हम कहें कि पता नहीं हमको तो इतना पता नहीं हम तो इतना केयर नहीं करते हैं कि सब्जी की सब्जी कही जाते है साग का साग हम तो जानते हैं सागों की सब्जी कही जाती है। तो कहा तो है अच्छा हाँ तो सुनो का होगा अच्छा कहूँ हमारे डिपार्ट से केहू आए वाई जे कहियो तो तू साग वाग बनाए रहे ती ना कहो कि हम सब्जी बनाए हैं तब तो तुम्हारी बेइज्जती करा के धय देबू तो हम कहें कि नहीं तो हम कहें नहीं हम इन्ना कहा हम तो कहवे कि सब्जी है। तो कहता है जैसे हमसे कहो कि सब्जी चावल दाल तो हम तो यही सोचे ना कि अगला घर में बना हुए तब अगला ऐसे बोला था है। अब साग नहीं तो कहीं सरसों का साग कहा जाता सुनो और मूली के झलरा का साग कहा जाता है मतलब बहुत साग बताएं मेथी का साग कहा जाता है पालक का साग कहा जाता है तो हम कुछ ना है बोले। हम कहें कि अच्छा हमका नहीं पता रहा हम जानी सब्जी कही जाता है। तो कहा था तो पता है कि हमारे साथ स्टैंडर्ड आदमी आवत है तो तू कैसे ऐसे ऐसे कैसे कह दियो यही बात की तोरे लगे फोन लगाए थे। हाँ तो यही बात की तात्विक का बात तो कहें कि आज से हमरे साथी के हुआ है तो हमका खाना जोन घर में बनी रहा मतलब जोन बने वही बताओ करो जोन ये ना बताओ करो कि साग उग सब्जी कह दिया करो हम तो सोचे कि घर स्टैंडर्ड खाना बना है और पता लगे हमारी बीबी बना के साग धरी बार। हाँ तो यही बात तुमसे पूछे क्या तोहरे घरे साग कहा जाता रहा सब्जी कही जात रही और हम अपने मन में कहें कि जो हम कब्बू काम करे हुए तो तुम कब बताओ करी हम कब्बू कमाओ नहीं करें तो कहा बताई साग का साग कहा जाता है सब्जी सब्जी। हम कब्बू कह रहे नहीं क्या कि हमारे घरे काव कहा जाता हमारे घरे तो यही तरह की सब्जी बनी है चलो सभी खा। तो उनका कुछ ना पसंद तो यही तो मतलब घर में काव बने मतलब कैसे बताए कि घर में काव बने देखो कहीं है पालक की सब्जी ना बनाओ कहीं है साग मेथी ना बनाओ कहीं है झलरा ना बनाओ सिर्फ वही सब्जी बने जो उनमें अच्छा पापा वो कहीं है कि बेटा ऐसे एक सब्जी मत बनाओ मतलब चेंज कई कई बनाओ तो हम काव बनाए हमका समझ में नहीं आओ तो हम बैठ जाए थे आराम से कि हमका समझ में नहीं आओ तो हम कौन खाना बनाए दी। तो यही बात रही तो कहीं कि हम तो जानी तो हो रहे यहाँ सब्जी कही जाती थी यही बात बता तो फोन करे रही। तो आज हमका चावल लाके कहते हैं का बना बात हम कहें सब्जी सब्जी बनाए हैं तो कहीं का एक सब्जी बनाए तो हम कहें
सुबह दाल चावल मटर आलू टमाटर की सब्जी रही, यह टाइम सीएम के सब्जी बनी है। तो कहा था सीएम के सब्जी टिफिन बना लगाऊ आलू मटर सीएम के शाम के सीएम। अब बताओ मम्मी, जैसे हमारी मतलब सुबह पापा जाए नन्या जाए तो फिर हम सब्जी बनाई, दोपहर में दाल चावल रोटी बनाए, फिर शाम के तो फिर तो सब्जी बने के रहे उनका ले जाए तो फिर वही सब्जी, तो फिर हमें सब्जी बनाओ रहा तो हमको खुद नहीं समझ में आओ कि हम रोज काव बना दी। तो यही तो बात है कि जोन रहा वो का बना हुआ तो खाई है ना, पापा खा ले हैं, मम्मी खा ले हैं, बच्चे खा ले हैं, हम वो अनन्या चलो तो समझदार है। तो यही तो बात सुनो, अब सुबह आलू पराठा बना तो कहीं नहीं कहता हूँ कि कैसे पागल बनोगे का। अब चलो आलू की सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, सूखी सब्जी बनाओ, दाल तो खाता है। देखी नहीं साग बना के दी हो तू, कह दी सब्जी बनी बा। अब वह साग महीना 10-15 दिन कहा जे देखियो नहीं साग बना के तू धै दियो, कह दो सब्जी बनी बा। यही बात मेन रही और कोनो बात ना रही। अरे कुछ नहीं, पता नहीं कौन मेरी मम्मी उनका पाली, हमका खुद ही नहीं समझ मौत की कावे खा थे और खाई है मम्मी बिल्कुल थोड़ा सा, यहू नहीं ज्यादा लिए। हाँ बिल्कुल सब्जी चाहिए लेकिन थोड़ी चाहिए, दाल तो बिल्कुल रोज चाहिए। तो यही बात है, तो वही मम्मी तुरंत ही जान गई। मम्मी तो ये बतिया तू ना जानो लेकिन मम्मी तुरंत जान गई। मम्मी कहीं क्यों ना है भैया, ये बात हमारे सुधे कहीं नहीं है। और खाइन का दूई रोटी, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा साग चिकन, थोड़ी सी दाल और बाहर से नाश्ता करके हम वही ना पुनवा रहे। लेकिन काम उतना नहीं करेगा। और शाम के कहीं रोटी ना बने, सुनो शाम के कहीं रोटी ना बने, आज हम लंच न ले जा। फिर एक जने फोन करी कि पांडे आज खाना लेके आना है, तो पांडे तो फोन उठाए तो पांडे तो फिर से कहें कि खाना बनाओ, तो फिर खाना बनाए। और सब्जी यहू जान लो, सब्जी ले जाई है पहले टिफिन चेक करी है कि सब्जी कैसे बनी है और क्या चटनी कैसे बनी है, मूली कैसे काटे हैं। मूलिया उलिया ऐसे ना रखो कि ऐसे रख दियो, बस सजा के रखो मूलिया। हाँ काट के मूली काटबो उतना तो तुका बताई है कि तुम्हारे ढंग ना है, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे करो। अरे मम्मी रहो तो एक 15 दिन रहो तो सतवा। दिना भर काम रहा था, दिना भर। हाँ काव्या नहीं असुविधा। और बच्चे उन्हों को आदत सिखाता है, बच्चे ठंडी रोटी ना खाइए, कहीं मम्मी गर्म। गर्मी में तो कुछ नहीं बोलते, गर्मी में तो खुद हो कहा थे थोड़ा ठंडा बाहर में बना के रखो।
सुनो जाए लागे तो कहता है कि सुधा हम गए हाँ तो कहता है इधर हमारी आदत है हम थोड़ा हम लाग गए ना साग सब्जी ले लो हम जब से हम लाग गए तब से थोड़ा काम का इन गौर करे लागन कि मतलब जोन कहा थे थोड़ा हम इधर उधर कह देते जैसे कहीं ना होगा इतना कपड़ा मम्मी नहाते इतना कपड़ा रही रोज डेली एक आदमी कपड़ा है एक मान लो ठंडी है इतनी जल्दी तो हाथ शर्ट गंदा हो जाता है अगर हम कह दी कि शर्ट गंदा हो गया ना तो कहीं ई तो तोहार कहा फर्ज ना है कि शर्ट तोहार न धो तो यही बात हम कही थी कि बताओ डेली एक ठंडी में 2 दिन एक शर्ट पहन के चला जाओ का हो नहीं सकते तो कहीं ना धुलो लेकिन ई ना कहा करो कि ना करो काम ना करो लेकिन ई ना कहो कि ना करो और हम कह दी थी कि ना करब आज हम बात यही पर है हमार झुक जुआ काम करत 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 यूँ करो घरे जाओ घरे करो यही बात है उनके मतलब रहा था कि रोज पर्दा छांटो रोज चदरा छांटो रोज गद्दा कवर छांटो रोज तकियो कवर छांटो रोज फ्रिज पोछो रोज किचन पोछो कितना काम हम कही रही बताओ और जन्मे करे थे घरी बहुत सफाई हुआ कहीं मम्मी सफर जाते उससे काम नहीं सफरा था और मम्मी यही समझाती कि भैया हमार चल गए सुधक साथे सुधक काम धीम करा थी तो करे जो कोनो बात ना हम करी थे हमार बात अलग रही सुधक बात अलग है उनके मतलब रात डेली बताओ डेली कोनो चीज ये गंदा रात मम्मी डेली 6 बजे 7:20 पे ड्यूटी से आवत है तो सुनो यहू काम और यहू नहीं ना कि हमारे पीछे वो छोड़ दिए जैसे चाय न पिए चाहे 12 साल की के बज जाए 12 जब चाहे 1 बज जाए हम काम में लागे तो चाहिए न पिए के लाओ तू काम करती हो हम चाहिए पी ली चाहिए साथे पियो खाना वो साथे खाओ तो हम कहते कि जैसे तू ड्यूटी कह के आवत आओ तो हम काम करत रही थे और हम कमेंटो करा करी थे सबका तो कहीं मोबाइल में लाग लगता दिमाग खराब हो जाता है यही तू सादा बिजी रहाती हूँ तो कहीं चाहिए सा था अच्छा मम्मी जब हम चाय पिए बैठे तो 10 मिनट बैठ गए हाँ कुछ बात करता हूँ अपन वही लागे लेकिन थोड़ा मोबाइलों में ध्यान रहा था हमार तो हम मोबाइल में फिर कहीं मोबाइल उठा दो तो अब हम जब मोबाइल में लागे तो थोड़ा बहुत तो मोबाइल उठोबे करबे तो कहिए कि अब यह काम तो तुका देखा है तुका मोबाइल तो सुधा देखा थे यही से हमारे गुस्सा लागत है चाय साथे पियो खाना साथे खाओ और जो काम करवाओ करे कहीं काम जल्दी जल्दी करो 10 बजे तक तो हर काम ना हो पाओ तो हर 12 बज जाते तो हमारा काम 12 में कही थे कि तू खा लियो सो आराम से हम खाना बनाए रहा गरम गरम दिया तो कहिए ना ही हम खाना ना खावे खाना तू पूरा काम तू कह लियो तो खाना खाओ तो बताओ हम कोनो घड़ी थोड़ो लागे हन कि हम सब काम कैली तो हार पूरा साफ सफाइयो चलो केहू आ जात बेइज्जतियो न हुए तो हार तो कौनी में हम कमवा करी भगवान तो यही बात है अब आज कहा था सुनो सुबेरे चाय पी के कहा था तो कौन काम बा हमके ना मैं बहुत काम बा रहे तो कहा था अब बताओ इनके काम हम खुद करी हम कहें कौन काम तुम्हारा करा था तो कहा था गेट हम सारा पोछे दरवाजा हम सारा पोछे थे और कहा जानी कितना काम बताएंगे का हम रोज करी थे तू गाँव करत थे तो हम कहें तू ना देखा काम करी थे हम यही बात है और कोनो बात नहीं और सही बात मम्मी हमहू करी थे पहले तो नहीं करते रहे हमारा आदत ना रही लेकिन अब हमहू नहीं अच्छा लागत हम जो बिलर हमहू करी थे लेकिन जब हम इधर उधर में थोड़ा लाग रहे थे तो नहीं टाइम मिल पावा दुनिया सुन रहा है यही काम है बस और कोनो काम नहीं ना कोनो चीज के वो बात यह है लेकिन हमसे इतना ना हो पाया नहीं हमारे एक सवाल है कि रोज थोड़ा गंदा रात हम उनसे कहे थे कि रोज नहीं गंदा रात हम संडे संडे डेली कहती हो कहीं का रोज करो ये रोज वाला काम आता है तो हमसे हो ना पाए दुनिया से ये साग सब्जी ले लो चलो मम्मी रखो है
नमस्ते मम्मी। रे राम 10:17 हो गई आज। साग सब्जी ले लो, यही तो बात है भैया, साग सब्जी में इतना फर्क है। हमारे यहाँ साग सब्जी, साग को साग बोलो, सब्जी को सब्जी बोलो। ठीक है, अब चलता हूँ। ठीक है भैया, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम भी जा रहे रोटी खाने, अभी रोटी नहीं खाई, थोड़ा रोटी गरम कर लेती मैं भी। गुड नाइट भैया, जाओ सो।
हाँ बेटा हाँ
मम्मी बर्गर खा देगा जाना हाँ कहा बाबू मम्मी 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 हाँ पानी दे दो पानी ले आऊं मम्मी आनो जल्दी आओ फर्स्ट लगी है ले आओ लो बेटा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्यों जब मेरे पास आके इसको जब मेरे पास देखा कि ना तो मेरे मूड पे बैठ जाए अरे इस पे तुम आ जाओ ना उसके बाद में तो कोई जरूरी थोड़ी है तो हाँ और सही में देखो कैसे तुम्हारी सट के सोती है हे बच्ची तुमको बहुत प्यार करती है ये प्यार करते तो चिपकती जो चिपक जाते तो मूड पे भी बैठ जाए कर ठीक है नहीं बाबू
सत्य पांडे लोकगीत। सरिता पांडे लोकगीत। सरिता पांडे लोकगीत।
एक अनन्या आ जाओ नीचे आओ, लग जाएगा तुम्हें बेटा, नीचे आओ तुम, और नीचे आओ, देखो कैसे लेटी हो। पानी दे तो पहले। पानी तो वहीं रखी हूँ बेटा, कहीं ला के अभी काव्य वक्त पानी दे के मैं रख, वही देख उठ के बेटा। मैं उठ नहीं पाऊंगी। हाँ उठ नहीं पाऊंगी। काहे उठे ना पाए, वो रखी हूँ धरिया रखी हूँ रे बेटा। हे 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 वाह मुआ, जब नहीं तो मरा के देख के मारे बाबा रखे जब भी आओ ये वाह आओ। मैंने भैया हाँ कहाँ है बाबू, कहाँ बेटा, आओ जा तू इधर हम तेरे पास। दूध चाहिए। दूध चाहिए हाँ कहाँ चाहिए, आओ ले लो वाले बेटा, आ जाओ तुम मिलेंगे। नहीं।
उसको क्या मानेंगे आप? मेहमान मानिए। बच्चा लड़की है कि लड़का, आप नजदीक से देखना, देखिए कुछ नहीं दिख रहे हो ना, न लड़का न लड़की, अच्छा उसको क्या मानेंगे आप? मेहमान मानिए। बच्चा लड़की है कि लड़का, आप नजदीक से देखना, देखिए कुछ नहीं दिख रहे हो ना। मम्मी हाँ हो का है मम्मी गम्मी उनके लागत है घर मम्मी मम्मी उधर चलो। और उसके बस और उसको नहीं अच्छा कर दिया।